Assalamu alaikum everyone. Welcome to the cricketing hour. Again, it's the highest score in PSL history. मैं तो अब officially ये कह के थक गया No, हूँ. no, no. You're not asking PSL history and T20 history. These are the most runs in a match in T20 history. I Absolutely think 500 क्रॉस कर दिए दोनों टीमों ने. पिंडी पिच का हम क्या ही कह सकते हैं. क्यों हादी, क्या ख्याल है आपका इस पिच? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट गुड फॉर द PSL और नॉट टू हैव अ पिच लाइक दिस? yes and no. क्योंकि I think when we talk about pitches like this, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं bowlers के लिए. हम बात करते हैं Trent Bridge के, there's a little bit of swing movement या seam movement है दो things में for bowlers like Modi या फिर Broad या फिर शाहीन शाफिदी. ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है. ना बॉल स्विंग करनी है एक इंच, ना सीम करनी है, ना बाउंस करनी है. बॉल बैट पे आनी है और बाउंड्रीज भी आई थिंक कोई 70 मीटर या 60 मीटर की बाउंड्रीज हैं. तो दैट जस्ट मेक्स इट अनफेयर फॉर बॉलर्स. लेकिन हाँ, इट्स गुड कि हाई स्कोरिंग मैचेस से और एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, स्पेशली अमंग द फैंस. अच्छा, आई टू सम एक्सटेंट डिसएग्री विद दैट बिकॉज आई थिंक एक बात है, जो मर्जी का वो रावलपिंडी पिच के बारे में, इट फोर्सेस आवर बैट्समैन टू बिकम मोर अटैकिंग. आप बाबर आजम को कभी 190 स्ट्राइक रेट पे खेलते नहीं देखोगे, पिंडी पिच ने कर दिया है. आप कभी हमारे बैट्समैन को ऐसे एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, ऐसे मॉडर्न T20 माइंडसेट को अडेप्ट करते हुए देखोगे जितना ये पिंडी पिच ने किया. और अगर लॉन्ग टर्म में दिस कैन फोर्स आवर बैट्समैन टू बिकम मोर एग्रेसिव, आई थिंक दैट्स अ फेयर सेक्रीफाइस. लेकिन ओवरऑल ज़रा बात करते हैं. पहले इन जनरल क्वेटा नाउ देव बिन नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट डिस्पाइट सॉर्ट ऑफ अ लेट रिसर्जेंस एट द एंड. उन्होंने कराची को हराया, उन्होंने पेशावर को हराया, मुल्तान के खिलाफ अच्छी चेज़ की, अच्छी कोशिश की. बट ओवरऑल इन द PSL in the first 5 games they were just miserable. And if someone asks me, I think it's a fair result that Peshawar qualify above them. Yeah, absolutely. और शुरू में हम बात करें, their top order was not firing the way they wanted to. Apart from that one game जिसमें कप्तान ने सेंचुरी स्कोर की, Roy was not really performing that much, और उनके इफ्तिखार was struggling. Sarfaraz was not making those runs that he wanted to, and they kind of struggled in that affair. और शुरू के 5-6 matches तो they looked defeated. लेकिन उसके बाद after Roy and Kaptil picked up their form, they managed to chase that 240 and high totals. So I think उसके बाद उनकी resurgence थी. लेकिन the way Peshawar have played throughout this tournament, I think they were just the better side to qualify. Okay, so I have $1 million question for you. Have Quetta done better without Sarfaraz? I think so. क्योंकि Oh, सरफराज का एक मसला होता है कि वो बहुत जल्दी यंगस्टर्स अपना गुस्सा निकाल देते हैं, which is very 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 destructive in such matches. क्योंकि आपको पता है कि 250 तो पढ़ना ही है जैसी पिच है. तो अगर आप किसी बच्चे को हर चौके पे डांटोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल शाटर हो जाएगा. That's something which I personally think Sarfaraz shouldn't do as a captain. And when people like Nawaz take the captaincy, they don't put that extended pressure on those bowlers. well, that's definitely a factor as well. Coming to the game now, Quetta won the toss, inserted Multan into bat, and 10 overs, 156 for 0. In my mind, 300 was genuinely a possibility. Forget that, Usman Khan at that point had scored 120 in the first 10 overs. एंड अगर वो वही चीज़ आखिरी 10 में करता, ही वुड हैव एंडेड विद 240. एटलीस्ट 80 तो कर लेता. आई थॉट अ T20 डबल सेंचुरी वॉज ऑन द कार्ड्स. ऑनेस्ट बात है, अगर मैं उसकी जगह होता मैं प्रॉब्ली थोड़ा सा सेल्फिश होकर डबल सेंचुरी के लिए ट्राई करता, और एटलीस्ट आई वुड हैव ट्राइड टू पास गेल. बट व्हाट अ नॉक फ्रॉम द यंगस्टर. वेयर हैज ही बीन हाइडिंग दिस एंटायर PSL? नहीं, आई थिंक वी हैव नॉट सीन दैट मच फ्रॉम हिम स्पेशली. और हम जब उन देख रहे हैं कि मुल्तान चेंज का बैट्समैन को, डेविड मिलर स्पेशली वाज बॉट आउट ऑफ द साइड, तो ऐसी पिच के लिए आए वो मैदान में. ही केम विद अ सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी इन PSL हिस्ट्री. और ऊपर से आई थिंक इट वाज अनलकी कि जैसे वो आउट हुए 120 पे. वी वर रियली होपिंग टू सी दैट 150 to 200 इनिंग्स, लेकिन आज हम देख नहीं पाए उनसे. For sure, and this actually isn't the first time we've seen Usman Khan. In PSL 2021, he was actually in Quetta's team, and he was the player of the match when they won against Multan. एक मुझे इस पूरे PSL में बड़े मज़े का ट्रेंड नजर आया, वो ये कि जो जो भी क्वेटा के फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन सब ने क्वेटा से पूरी दुश्मनी उतारी है. एक उस्मान खान ने भी सेंचुरी बनाई क्वेटा के खिलाफ, रॉसो ने अपनी फॉर्मर टीम क्वेटा के खिलाफ 78 मारे, आजम खान ने कोई 95 बनाए अपनी टीम क्वेटा के खिलाफ, अनवर अली जो है वो क्वेटा छोड़ के गए, उनने आज इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, साइम अयूब क्वेटा छोड़ के गए, वो इतना PSL में लाइट अप कर रहे हैं. तो आई थिंक प्लेयर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है ना, तो क्वेटा की टीम को छोड़े, उनका फॉर्म यहाँ से यहाँ राइज कर जाएगा. ये क्या बैड लक हो रही है इनके साथ.
ये आई थिंक अभी 2-3 और बैड लक्स भी होनी है इनके साथ. हसनैन बच गए, नसीम भी बच गए थे, उनके भी थोड़ा सा टाइम आ गया अपनी स्विच मारने का. लेकिन आई थिंक बस ये इन्होंने गलत टाइम पे प्लेयर्स रिटेन नहीं किए, क्योंकि प्लेयर्स लाइक साइम अयूब और जो हमारे पास थे उस्मान अहमद, इन्होंने उन टाइम पे इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिया व्हेन दे नीडेड टू बैक देम. क्योंकि लास्ट सीजन यस दे वर एमेचर्स, लेकिन दे स्टिल हैड दैट पोटेंशियल टू स्कोर दोस 50s एंड सेंचुरीज. और उन्होंने इस साल ज़्यादा उन कॉशियस रहे अपनी सिलेक्शन में. आते हैं उनको ये बात काफ़ी हर्ट की है. सही. अच्छा, so Hadi, coming back to the tactical side of the game now. Sure, it was a pretty flat pitch, but bowling changes wise, yeah, bowling options wise, was there anything the captains could have done better? I think क्या कहते हैं in the last 10 overs Quetta really restricted Multan. At a point they were looking to score I think 280 to 290 तो आराम से हो रहा था उनका. लेकिन the way their bowlers kind of bowled their off cutters या Yorkers especially into the surface, that really played into the hands of Quetta. और उन्होंने चांस नहीं दिया for those people to make those high runs. और आई थिंक ये काफी क्रेडिट देने वाली बात ऑन सच ए फ्लैट पिच के एवरी बॉल वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ द स्टेडियम and they kind of restricted them to only 10 runs per over in the last 10 overs. सही. ज़रा मुल्तान की टैक्टिक्स की बात करते हैं तो आज बीच में हैदर अजहर का भी इंटरव्यू हुआ था एंड ही वाज इन्फॉर्मिंग अस ऑल हाउ मुल्तान इज़ अ रियली डेटा ड्रिवन साइड एंड आई थिंक वी सॉ दैट इन देयर बॉलिंग चेंजेस टुडे. उन्हें इनिंग स्टार्ट ही की खुशदिल शाह से, who spins the ball away from the right-handed Roy and Guptill. फॉन का नेगेटिव मैचअप ले आए और एक खुशदिल शाह का ओवर निकाल दिया. दिस गेव देम द एडवांटेज कि अगर कोई और बॉलर बुरी बॉलिंग करा रहा है, उससे सही बॉलिंग नहीं हो रही, तो उसका एक ओवर कम करा पाएँ. एंड दे वर एबल टू यूज़ दैट. अनवर अली हु वाज देयर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, उसके सिर्फ वो 3 ओवर कराए उन्होंने, क्योंकि खुशदिल पहले ही एक अच्छा ओवर करा पाया था. अगेन प्रो एक्टिव थिंकिंग बाय द मुल्तान टीम. क्वेटा की चेस पे ज़रा बात करते हैं. The final scorecard says they got past 250. They were within 10 runs of beating Multan. Do you think there's anything they could have done better batting wise? I don't think so. Because once Roy fell and once Guptill fell, it was inevitable for them to lose. Lekin that partnership between Iftikhar and Umar Akmal kind of lifted them to that 170 mark. और उसके बाद उन्होंने little cameos from Mohammad Nawaz and Umair Qais Ahmed, and they really propelled them to that 250 score. लेकिन they were in no place to score 260 और 260 करना भी बहुत मुश्किल होता है unless you have a set batter to score that century. और आज रॉय और गप्टिल दोनों नहीं थे उनके पास. बड़ी बात है वैसे रॉय और गप्टिल की मेजर परफॉर्मेंस के अलावा भी उन्होंने 250 पार कर लिया. ऑनेस्टली आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड. उमैर बिन यूसुफ द यंगस्टर एब्सोल्युटली लिट अप द गेम. और उमर अकमल फिर से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं. रियली ग्रेट टू सी हिम एज वेल. बट Peshawar Zalmi are through. We have our final 4. Quetta and Karachi have been knocked out. And अब सिर्फ जो सवाल है वो ये कि टॉप 2 में कौन क्वालिफाई करेगा. लाहौर तो कंफर्म है. अब अगर इस्लामाबाद कल अपना मैच जीत जाता है पेशावर के खिलाफ तो they'll be top 2. Otherwise it will be Multan. Hadi, on the spot, who will be top 2? Lahore Islamabad. Lahore Islamabad. And on the spot again, kal the big game, Lahore versus Karachi. Who's taking that one? Dominating performance by Lahore. Whoa, that's a pretty big call because Lahore will be returning back to their fortress, the Qazafi Stadium. So I think that's a wrap. Then any pertinent questions from the game? Well, I think only one pertinent question is that कितने रन काफी होंगे इस पिच पे. I think that is finally answered today कि उन्होंने 262 मारे, लेकिन फिर भी रॉय आउट करके भी गप्टिल आउट करके भी एक टीम में 252 कर लिए. तो आई थिंक आगे फ्यूचर मैचेस में देखना होगा, स्पेशली इंटरनेशनल मैचेस के इस पिच पे कितने इनफ है. 280, 290, इवन 300. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर सीइंग कि कितने रन इस पिच पे पार होंगे. इनफ और पार से याद है ज़रा हमने अब्बास अफरीदी का तो जिक्र ही नहीं किया बेचारे का. द बॉय नाउ इज द होल्डर ऑफ द फजल महमूद कैप. He's passed Hasanullah in most wickets taken in this HVL PSL. A fifer today on this flat pitch, a fourfer yesterday on this very flat pitch. He's taken 9 wickets in 2 games. जब मुश्किल से पूरी टीम 9 wickets ले रही है इस pitch पे. Unreal stuff from him. Personally, मेरे opinion में sure brilliant bowling from Abbas, especially at the death, but I would still rate Hasanullah a bit higher because Abbas की wickets ज़्यादातर बस death पे हुई हैं जब batsmen slog कर रहे होते हैं. Still credit to him for being the one to get those wickets. But thoughts about the rising youngster? Yeah, I think he bowled really well in those death overs, and especially when people tried to accelerate. क्योंकि last 5-10 overs हमने देखा कि मुल्तान really didn't let them get going to that extent.
और उनको हमेशा रखा टू दैट 11 रन रेट और 10 रन रेट, क्योंकि आखिरी 10 ओवर्स में पता है कितनी फ्लैट पिच थी और कितने रन पड़ते थे, बट ही bowled into the surface, he bowled those change up, he bowled those Yorkers, those bouncers. हमने देखा जो उन्हें विकेट ली, स्पेशली इन द पेशावर गेम. तो वी मस्ट क्रेडिट हिम फॉर bowling on this flat pitch. उनकी इकोनॉमी भी आई थिंक इतनी बुरी नहीं थी अब्बास अफरीदी की. It was just around that 11 mark. On seeing के 250 हुए हैं इस pitch पे, तो 11 is not that bad. Alright, then that's a wrap from finally, thankfully, the last night game at this Rawalpindi surface. But it has been a pleasure to watch these games. That's all from the Cricketing Hour. Allah Hafiz.